A block of mass 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up by the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second. Show that the work done by the applied force does not exceed 40 joule. Find the work done by the force of gravity in that 1 second if the work done by the applied force is 40 joule. Find the kinetic energy of the block at the instant the force ceases to act. Take G is 10 meter per second square. एक इंक्लाइंट हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, इस पर एक मास रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है 2 kg, m इज इक्वल टू 2 kg। इस पर एक अपवार्ड फोर्स 20 न्यूटन इज अप्लाइड। This force acts for 2 seconds. The first part show that the work done by the applied force does not exceed 40 joule. The time t is 1 second. A part, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। इस mg का एक कंपोनेंट होगा mg साइन 37 डिग्री, ट्वेंटी इंटू 3/5 12 न्यूटन। For maximum work done, for maximum work done by force F, मैक्सिमम कब होगा? when displacement is maximum। और डिस्प्लेसमेंट कब होगा मैक्सिमम? when acceleration is maximum। For maximum acceleration, no frictional force would act। Net upward force parallel to inclined is Fe F1, that is F minus mg sin 37 degree, or 20 minus 12 is equal to 8 न्यूटन। एक्सेलरेशन होगा a is f1 by m, 8/2 is equal to 4 meter per second square। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s is equal to ut plus half at square
u is 0, hence this part is 0. तो हाफ इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीटर. इसको हम डी भी लिख सकते हैं. दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज एफ. डी इज, सपोज दिस इज second position and this is D. D is 2 meter. Maximum work done by F. Maximum work done by F is equal to 20 Newton force into displacement 2 is equal to 40 joule. तो maximum displacement is 40 joule. Second part, B. Find the work done by the force of gravity in the 1 second if the work done by applied force is 40 joule. Inclined, this is B part, 37 डिग्री इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, और इसका पैरेलल टू दिस कंपोनेंट इज mg sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 12 न्यूटन. अगर हम इसको F2 से डिनोट करें, और डिस्प्लेसमेंट D इज इन अपोजिट डायरेक्शन, D इज इक्वल टू 2 मीटर. तो वर्क डन बाय F2 W इज F2 into D and cos angle between these two, F and D. This is 180 degree, hence this will come FD. F2D minus 12 into 2 is equal to minus 24 joule. Minus 24 joule. Then C part, find the kinetic energy of the block at the instant the force ceases to act. For kinetic energy, C part, acceleration is 4 meter per second square, t is 1 second, m is 2 kg and initial velocity u is 0. So after 1 second the v will be u plus 80 or 0 plus 4 into 1 is equal to 4 meter per second square. The kinetic energy, required kinetic energy is half m v square, 1 upon 2 into 2 into this is 4 meter per second, 4 square, 16 joule.